Hey everyone, myself Manpreet and I welcome you all in last minute preparation for BFGHS Faridkot Staff Nurses Examination, and this is a part 4 of this series, and I've already created 3 videos before this, and if you have not watched that video then please do watch that video before sitting in an exam. And if you have not subscribed the channel then please subscribe the channel and press the bell icon so that you can receive all upcoming notification from the Nursing Scoop. And along with this, you can follow us and subscribe us on Telegram, Facebook, and Instagram. So, without any further ado, let's start today's video. And here is the first question. So, the question is, nurse employed in eye clinic and checks the client intraocular pressure. Okay, and notes that the pressure is 16 mm of mercury in right eye and 18 mm of mercury in a left eye. The nurse should tell the client the pressure is indicative of which result. सो इंट्राओकुलर प्रैशर तुसी मैजर किया है 16 mm है राइट आई दे विच एंड 18 mm है लैफ्ट आई दे विच तुसी इंटरप्रिटेशन देनी आ कि जो इंट्राओकुलर प्रैशर आ नॉर्मल आ जां एलीवेटेड आ जां की आ. सो ऑप्शन हम दिते हुए हैं नॉर्मल इन बोथ आईज, एलिवेटेड इन लेफ्ट आई, एलिवेटेड इन राइट आई और लो इन बोथ आईज एंड रिक्वायर द ट्रीटमेंट टू इंक्रीज इट. So to answer this question, you should know the normal value of intraocular pressure. So the normal value of intraocular pressure is 10 to 21 mm of mercury. 10 to 21 mm of mercury. So now this range is within the normal figure. Okay, so one is 16 and one is 18. So 10 to 21 is normal one. So the answer should be normal in both eyes. So here the right answer is option A. So the next question is, a nurse monitor for which acid-base disorder that likely to be occur in a client with ileostomy. So now what is ileostomy? I think ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. Ileostomy is a procedure in which the opening is created on a abdominal wall. Okay, so ileostomy ਹੈਗੀ ਆ. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੋਐਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸਮॉल ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਇਲੀਅਮ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ abdominal wall ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੈਟ ਕਿ ਜੋ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਫੀਕਲ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਊਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸੋ that this procedure usually performed when the colon is not working properly or in case of some disease conditions like colorectal cancer or ulcerative colitis like. So ileostomy जब हुई है then केड़ा acid base imbalance हो सकता है? You have to answer this question. Metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis और respiratory alkalosis. So देखो जब ileostomy ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ intestinal content ਨੂੰ ਕੀ ਆ remove ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, body ਚੋਂ. सो जब इंटेस्टाइनल कंटेंट जो हैगा आ डैट इज़ रिच इन बाईकार्बोनेट आइनस. ओके, सो हुण की है इलियोस्टमी दे विच जो बाईकार्बोनेट आइन हैगी बॉडी चों लॉस हो रहा है. सो इलियोस्टमी हो गई जां डायरिया हो गया, ये विच की हुंदा है कि जो बाईकार्बोनेट आइनस आ बॉडी चों लॉस हो रहा. मीनस कि एल्केलाइन डेफिशिट हो रहा है. एल्केलाइन डेफिशिट हो रहा है तो मीनस की केड़ी कंडीशन बनूगी? एसिडोसिस बनूगी. ठीक है, सो बाईकार्बोनेट आइन्स लॉस हो गए तो की होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. So next question देखते हैं. Next question is, a nurse is conducting a training session on cardiopulmonary resuscitation CPR. So the nurse should incorporate which guideline in a session? Okay, so the option A is stop the CPR when fatigue is felt. So this is inappropriate. Next is look, listen and feel for breathing. So look, listen and feel is no longer a part of CPR because it's a time consuming. So look, listen, feel nu remove कर दिता गया है recently. So next is give the compression first, then address the airway and breathing. So this option is right because the sequence की है. सब तो पहला आ जाता C means circulation, A means airway and B means breathing. So CAB sequence follow करनी होंदी है तुसी. So option C सही है इत्थे. And determine the cardiac arrest based on the unresponsiveness only. So इत्थे only option जो word है वो सही नहीं हैगा. सो जो कार्डियक अरेस्ट है तुसी डिटरमाइन करना होंदा ऑन द बेसिस ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस, ऑन द बेसिस ऑफ हार्ट बीट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रीदिंग. ओके, सो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता. सो राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन सी. Okay, so the next question is, a client is tested for HIV with ELISA test and the test result is positive. Okay, so ELISA test positive आया and the client is very upset and asks the nurse if this means he or she definitely has HIV. So how should nurse respond to the client? Options again, yes, you definitely have HIV.
So option B is another test will be done to determine if you have HIV. Option C is false positive results are reported all the times and you should not be worried. So ये तो बहुत ही इनएप्रोप्रिएट, बहुत ही वेग जिहा आंसर आ, सो ये गलत आ, ठीक है. सो नेक्स्ट हैगा ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स मीन्स द इन्फेक्शन वाज डायग्नोज अर्ली इन अ इनिशियल इन्फेक्शन पीरियड. सो ये भी ऑप्शन गलत आ. सो ਇਹਦਾ जो राइट आंसर हैगा ਆ डैट इज ऑप्शन बी. जब एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आता है दैन आप एक होर टेस्ट करते हैं टू कन्फर्म दी HIV. सो किहड़ा टेस्ट करते हैं वो मैं पहला गोल्डन पॉइंटर्स वाली वीडियो डिस्कस किया है. जे तुहानूं पता है कि विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू कन्फर्म दी HIV दैन पोस्ट योर आंसर इन अ कमेंट सेक्शन. सो डू कमेंट योर आंसर विच टेस्ट इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ HIV AIDS. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a child is admitted to the emergency department with a dyspnea related to the bronchospasm. So a nurse should place the client in which of the following position? I think सबनों इहदा आंसर पता होगा. The answer is high Fowler position, because high Fowler position च की हुंदा है chest expansion, lung expansion हो जाती है and that will facilitate the breathing. So ये भी क्वेश्चन आपां positioning वाली वीडियो च डिस्कस कीता सीगा. So the right answer is option A. Okay, so next question हैगा a client with iron deficiency anemia is taking the iron supplements. Okay, iron supplement चल रहे हैं and a nurse emphasized to the client the drug that will increase the absorption. So इन्हां विचों कौन हैगा या जो drug दी absorption increase करूगा? Option A हैगा milk. So milk is not a right answer. Milk decrease करदा है absorption. So milk दे नाल iron supplement avoid करना हुंदा. नेक्स्ट इज ऑरेंज जूस. सो द राइट आंसर इज ऑरेंज जूस. जो वाइटामिन सी हैगा वो इनहांस करता है आयरन सप्लीमेंट्स दी अब्जॉर्प्शन. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. एंड फूड जो हैगा फूड दे नाल भी की है तुसीं अगर एम्प्टी स्टमक लैने आ तो आयरन सप्लीमेंट दी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा वधिया तरह नाल हुंदी आ. सो फूड इत्थे राइट आंसर नहीं हैगा एंड बीटा कैरोटीन दा अब्जॉर्प्शन दे उत्ते कोई इफेक्ट नहीं हैगा. So the right answer here is option B, orange juice. So the vitamin C जो हैगा या that enhances the absorption of the iron supplements. Okay, so next question देखते हैं. When assessing the oxygenation in a client with dark skin, nurse should examine the client. की examine करना है अगर dark skin हैगी आ to check the oxygenation, skin, buccal mucosa, nape of the neck means के back of the neck and forehead. So the right answer of this question is option B, buccal mucosa. So along with the buccal mucosa, you can check the conjunctiva, sclera, palm, sole, lips and tongue to assess the oxygenation in a client with dark skin. So the right answer here is option B. Okay, so next question देखते हैं. Nurse is caring for a client who has been placed on droplet precautions. So transmission based precaution the question है and droplet precaution थे हम. And which of the following protective gear is required to take care of this client? So select all that apply. So option A हैगा या glove, option B is gown, option C is surgical mask, option D is glass and option E is respirators. So जो right options हैगे या that are glove, gown, then surgical mask is also required for the droplet precaution and glasses. So respirator is required in case of airborne precautions. Okay, so here the surgical mask will work in case of droplet precaution. So respirator तो बिना इतने सारे दे सारे option बिल्कुल correct हैं for the droplet precautions. So respirator is required for the airborne precautions. Okay, because the droplets are too heavy to be airborne. So respirator is not required when caring for a client with droplet precautions. Clear जी? So next question देखते हैं. A client is admitted to the emergency department with a headache, weakness and slight confusion. So the physician diagnosed the carbon monoxide poisoning. So what should the nurse do first? Okay, so carbon monoxide poisoning ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਿਦ ਹੀਮੋਗਲੋबिन. ਸੋ ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਬਣਦਾ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਗੋਲ ਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦਿਸ ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋबिन. ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? by administering the oxygen. So administration of 100% oxygen by mask is the correct answer here. Okay, so the first action is to start the oxygen supply. So right answer of this question is option C. Okay, so last question of today's video is a nurse should place the client being admitted to the hospital with suspected tuberculosis
on what type of isolation? Again, transmission based precaution the question ਆ ਸਸਪੈਕਟਡ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੋਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ contact precautions droplet precaution or airborne precaution okay so in case of tuberculosis airborne precautions are taken and in airborne precaution the client is placed in one room with negative pressure okay so with negative pressure and doors are closed okay and in this the respirator is also used so that's all about the today's video. I hope you have learned something new through this video, and if you really like the content then please press the like button and share the video within your friends who are going to appear for upcoming BFGHS staff nurses exam. And if you have any query then you can ask in a comment section. So that's all about the today's video. So we'll see you in next video very soon. So stay tuned with Nursing Scoop and thank you so much for watching.